morning and welcome to today's class. Today we have to take kinetic theory of gases lecture 4. In previous lectures we have already been discussed something about the ideal gas equations, and also we have undergone the derivations of pressure of a gas in a closed vessel. Okay. Today we have to discuss the in fact applications of kinetic theory of gases. Applications of kinetic theory of gases means how we derive the different gas laws from kinetic theory of gases. Derivations of gas laws from this is our next topic today. That is derivations of gas laws from kinetic theory of gases. First we take in this regard. First we take the first law as your Boyle's law. Boyle's law. What is Boyle's law? That is PV equal to constant, or P1 V1 equal to P2 V2, or P is proportional to 1 by V, like this. This is Boyle's law. Okay. And now how we derive this from our today's lecture, that we have to discuss, that is from kinetic theory of gases. We have P equal to 1 by 3 rho V square bar, like this. Okay. This is the kinetic theory. In kinetic theory of gases, we know the pressure is given by this formula. Clear? Okay. After knowing this formula, we can further write this like this is total mass upon volume V square bar, and 1 by 3 m V square bar, and this is equal to your P into V. This is equation number 1. This is your equation number 1. Okay. That we have reached from the first one only. That is this is PV, definitely PV, and you can see how we derive this. Now from this, for a given mass, for a given sample of mass, we know it is mass of the gas remains constant. Okay, very simple. Mass of the gas remains constant, and V square itself is it depending on the temperature, that we have said that while determining the kinetic energy, average kinetic energy, we have seen that is half mv square can be written as 3 by 2 kt. Okay, there, that means the v square is depending on t. Okay, that means m is constant, m is constant, and v square bar depends on temperature. Therefore, PV is proportional to T. PV is proportional to T. Now you see, in case we have the temperature constant, then what we have, if T is constant, then PV equal to constant.
then we have this much, that PV equal to constant. Okay, and once PV equal to constant, that means here we can directly have the Boyle's law. In that way we have proved Boyle's law, and this is the proof of Boyle's law from kinetic theory of gases. Okay, again you know that whenever we use kinetic theory of gas to derive any law, we have to take the pressure formula only. By means of pressure formula only we can proceed. Okay, now let us take the next one. The next one is our Charles law. Next one is our Charles law. Charles law. It states that is V is proportional to P when P is constant. When P is constant. This is the statement. Okay. Now we have to prove this from kinetic theory basis. Again we write according to the kinetic theory of gases, the pressure is given by P equal to 1 by 3 rho V square bar. This is mean square velocity. This is definitely mean square velocity. You can see this is mean square velocity, and this is rho, that is density, and this is 1 by 3. Okay. Now whenever we have this type of thing, naturally uh, what we generally have, that is we can write 1 by 3 m upon v square bar. Okay, and after getting this, then we can take v this side, then v equal to 1 by 3 m upon p v square bar. V square bar. M is always constant for a given sample of gas in a container. M is constant. Okay, फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ गैस मीन्स एक बर्तन में जो गैस भर दिया गया वो कांस्टेंट ही रहेगा. आप उसको बर्तन का ढक्कन तो नहीं खोल लो, तो जितना गैस था उतना ही रहेगा. therefore m is always constant, but pressure और वॉल्यूम कैन चेंज. वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे सिस्टम बनाया और आपको क्या क्या करना है. तो सपोज समथिंग इज प्लेस इनसाइड अ वेसल, तो उसका मास तो आपने 25 ग्राम गैस रखा तो वॉल्यूम एक्सपेंड कर सकता है, but mass will not expand क्योंकि आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल रिमेन कांस्टेंट. आपने अगर 25 लाख मॉलिक्यूल लिया तो 25 लाख ही रहेगा. अगर 10 लाख लिया तो 10 लाख मॉलिक्यूल ही रहेगा, वो ज्यादा नहीं हो जाएगा. लेकिन हाँ, वो ज्यादा फैल जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ सकता है और प्रेशर कम हो सकता है, और कम जल्दी नजदीक नजदीक आ जाएंगे, दे आर compressed टुगेदर, दे आर कम क्लोजर, then in that case pressure will increase and volume is decreased. तो वो हो सकता है, but number of molecules will remain constant at the same time the mass remains constant. ये खास बात है. एक सैंपल के लिए लिखो, for a given sample of gas in a container the mass is constant. Okay, that is total number of molecules will also be constant. Okay, now after this what we have, V is proportional to V square bar upon P. V square bar upon P. ठीक है. तो जब इतना आ जाएगा तो what we have, let us see from this side. From this side, if we have this at constant pressure, V is proportional to V square bar, capital V at a small v square bar. Capital V is volume and this is your mean square velocity, and mean square velocity is directly proportional to T, temperature.
Therefore, capital V is directly proportional to T. This is our Charles law. So in that way we have proved Charles law also. बॉयल्स लॉ भी निकल गया और चार्ल्स लॉ भी निकल गया, दो चीज आ गए. और लेट अस टेक गैलुसेक्स लॉ, whether it is possible or not. Let us see. गैलुसेक्स लॉ, ये क्या होता है? This is your P is directly proportional to T. Pressure is directly proportional to temperature. ये आपको इसमें दिखाना है. तो अगेन सेम मेथड इसका भी है, सेम मेथड from kinetic theory of gases we have P equal to 1 by 3 rho V square bar, like this. Okay, and ये तो सेम स्टेप है. तो इसके आगे हम लोग देखेंगे what we can write 1 by 3 m upon V square bar, and in general we have 1 upon 3 m upon V square bar. M is always constant, therefore P is proportional to V square bar upon capital V. For constant volume we have P is proportional to V square bar. Yeah, P is proportional to V square bar. Okay, once we have this, then obviously what we need to find, that is but V square bar is proportional to capital T, the temperature, and therefore P is directly proportional to T, and that is what we have. The thing that is by this we can prove the Gay-Lussac law also, that is pressure is directly proportional to the volume, the temperature. बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया एंड गैलुसेक्स लॉ भी हो गया. अब हम लोग के जो नेक्स्ट जो इसमें देखना है, दैट वी कॉल एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. दैट इज आवर नेक्स्ट वन इज आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, एंड आफ्टर डिग्री ऑफ फ्रीडम we will wind up this today's lecture, and then in next lecture we will take the law of equipartition of energy and mean free path. Yes, now we discuss the degree of freedom. तो जैसे नाम से मतलब फ्रीडम मतलब आज़ादी. ओके, दैट मीन्स कितने एक मॉलिक्यूल, किसी गैस के मॉलिक्यूल्स कितने तरीके से आज़ाद घूम सकते हैं. द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस वेज बाय विच द मोशन ऑफ मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी डिस्क्राइब. द टोटल नंबर ऑफ मोशन by which given the motion of molecules of a gas can be described is called as degree of freedom. It is officially defined as the degrees of freedom of a dynamic system are defined as the total number of independent ways in which the particles of the system can absorb energy. देखिए खास बात इसमें यही है कि यह लिखा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम में भी इट इज सॉलिड्स और गैसेस. मोस्टली वी टेक गैसेस, सॉलिड्स को नहीं लेते हैं ना. The degree of freedom of our dynamical system are defined as the total number of independent ways in which the particles of the system can absorb energy. ट्रांसलेशनल मोशन हो तो उसमें भी एब्जॉर्ब एनर्जी कर सकता है, रोटेशनल मोशन होगा तो उसमें भी कर सकता है, वाइब्रेशनल मोशन तो उसमें भी कर सकता है. तो लेकिन हम लोग के जो गैस मॉलिक्यूल्स होता है, इट कैन नॉट हैव द वाइब्रेशनल स्टेट. वाइब्रेशन इज जनरली टेक प्लेस इन सॉलिड्स.
So whenever we have the term of gas molecules, either it could rotate like this, or it can have translational motion like this. Okay, there were only these two types of things are possible, and therefore we have to take a general formula for degrees of freedom. And again, telling you this thing, this is a very important thing, that whenever we say the degree of freedom, degrees of freedom of a dynamical system are defined as the total number of independence way, total number of independence way in which the particles of the system can absorb the energy. जितने तरीके से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अदर नंबर टोटल नंबर ऑफ मोशन इट इज इन जनरल टोटल number of motion by which the molecules can be described. Okay, it is in general the total number of molecules by which the it is the in general total number of motions by which the molecules of a system or molecules can be described. Molecules of a gas mostly because thermodynamic system में हम लोग gases ही लेते हैं. इसका एक general formula भी दे देते हैं. F is equal to 3n minus k. n क्या है? Number of particles in the system, and k is the number of independent relations between the particles. Number of independent relations between the particles. अब देखिए मैं अगर रिजिड बॉडी की बात करूं, सॉलिड रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी कैन हैव ट्रांसलेशनल मोशन, एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई में जा सकता है या जेड में जा सकता है. वी हैव एक्स वाई एंड जेड तीनों में जा सकता है. रोटेशनल मोशन भी आपके एक्स एक्सिस के अराउंड हो सकता है, वाई एक्सिस के अराउंड हो सकता है, जेड एक्सिस के अराउंड हो सकता है. तो देयर आर 3 रोटेशनल मोशन एंड 3 वाइब्रेशनल मोशन. द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन इज 6. Therefore we can directly say that for any rigid body where this formula will not be applicable, remember, for rigid body the total number of degrees of freedom will be 6 because it gives the it in general it gives the total number of motion. वहाँ कितना होगा टोटल नंबर ऑफ मोशन कितना होगा 6. 3 एक्स डायरेक्शन 3 आपका ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल. तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोशन किसी बॉडी का जो होगा उसी को उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं. तो वो भी उतने तरीके से वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं. तो ये भी लिखा हुआ है इट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम कैन एब्जॉर्ब एनर्जी. ये आ जाएगा. तो इसके बाद हम लोग देखेंगे डाई एटमिक, मोनो एटमिक और पॉली एटमिक गैसेस का कैसे हम लोग निकालते हैं. We have to take this formula intact, and without disturbing this formula we take rest of the thing. This formula is applicable for gases, that is F equal to 3n minus k. F equal to 3n minus k, where n is total is the number of particles in the system and k is the number of independent relation between the particles. For monoatomic, for monoatomic gases, we have n equal to 1 and k equal to 0. तो कोई आपस में रिलेशन नहीं है. नंबर इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल, जब एक ही आप पार्टिकल है किस बात के रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है. 2 3 4 कुछ भी नहीं कर सकते इसको. तो वी कैन हैव दिस मच ओनली, f equal to 3 into 1, that is 3. In general we can have this type of motion, either it can move along x, y or z. ये molecules है, it can move either x way in the direction of x, this is the molecules, either along this x axis, this y axis or this z axis. तो तीन मोशन पॉसिबल होगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए. तो इसमें तीन इंडिपेंडेंट वेज ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट भी हो गया, एब्जॉर्बिंग एनर्जी भी हो गया. तो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3. फॉर दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस. फॉर डाईएटॉमिक गैस
for diatomic gas, number of molecules is 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना 2 है, और आपका जो है आपस में रिलेशन भी क्या है कि दो टाइप का द नंबर इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स इट इज आल्सो 2 because at a time either you can take this as the origin about which this can move, or this as the origin about which this can move, this can rotate like this. Therefore number of independent relation between them is 2 and total number of particles is 3. तो इस फॉर्मूला के हिसाब से n इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 4. तो इसमें कितना हो जाएगा, फॉर सच मॉलिक्यूल्स वी हैव दैट इज total number of degrees of freedom as your 4. Okay, in such case we have 4 degrees of freedom, and here also we can just express that how it can do. We have two molecules, either it can move around this around z axis, it can rotate, or it can rotate about say y axis. You can very easily see that here I am having two diatomic molecule, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन लाइक दिस. ओके, जिसमें 2 होता है. और मोनोएटॉमिक गैस में क्या होता है, मोनोएटॉमिक गैस में आर्गन, नियॉन, हीलियम, जेनॉन एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सब जो हो जाएगा. तो और इसमें क्या हो जाएगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मींस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा. ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर पॉसिबल मोशन हो गया. 3 ट्रांसलेशनल, 3 ट्रांसलेशनल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, एंड 2 रोटेशनल. यू कैन सी either it can rotate at a time along z axis or about z axis or about this y axis. तो दो टाइप का मोशन हो गया. तो उसके हिसाब से भी कितना हो जाएगा कि अब यू कैन वेरी इजीली सी दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर. 3 plus 2 it is 5, not 4. It is having only one relation, sorry, only one relation, that all together we have 5. Here total number of total number of degrees of freedom is 5, because there are 3, what we have 3 translational motion, and 2 rotational motion, and 2 rotational motion. Okay, we have 3 translational motion and 2 rotational motion. That makes the for diatomic molecules the total number of degree of freedom is 5. Similarly, we can prove that for polyatomic, for 3 atomic, triatomic or polyatomic gas, we have 6 degrees of freedom. That we have for triatomic. For triatomic gas, there are 3 translational motion,
and 3 rotational motion. Total number of molecular motion equal to 3 plus 3, 6. Therefore, the number of degrees of freedom equal to degree of freedom equal to 6. Now, how could we do if I use the formula Cn minus k, Cn minus k, here n equal to 3, no doubt, and k is also equal to 3. क्योंकि एट ए टाइम इनके तीन में भी कहीं पर भी रिलेशन निकाल सकते हैं, तो आपस में इनके भी जो रिलेशन होते हैं, तो वी कैन हैव 9 minus 3, that is all together we have 6 degrees of freedom for such molecules. Okay, and we may have the situation like this. यहाँ देखिए लाइक 3 मॉलिक्यूल, ये जैसे कार्बन, एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, okay, etc. H2S, like this. These are the examples of triatomic gases. This is 1, 2 and 3. X axis, Y axis, Z axis. पूरा का पूरा X axis डायरेक्शन में जा सकते हैं, पूरा पूरा Y axis डायरेक्शन में जा सकते हैं, पूरा का पूरा अराउंड Z axis की तरफ जा सकते हैं. ट्रांसलेशन में 3 हो ही गया. In the same way, we can have 3 types of rotational motion also. Like इसको x axis में यहाँ पर रख के हम ऐसे 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 घुमाएं, y z axis के अराउंड, मैं ऐसे y axis के अराउंड भी इसको पूरा पूरा घुमाऊं, और x axis के अराउंड भी इसको मैं पूरा पूरा घुमाऊं, तो we can very easily rotate the entire system about any axis at a time. Either we rotate it around x axis, all the 3 molecules can move together, or around y axis it can be rotated all together, or around z axis it can be rotated all together. तो इनके आपस में तीनों रिलेशनशिप है, एक दूसरे के तीनों से एक दूसरे से रिलेटेड है. Therefore k is 3 and n is 3, and therefore we have this equal to f equal to 3 into 3 minus 3, that is 6. तो यहाँ पर ऐसे भी आपको देखेंगे तो 3 plus 3 6 आ रहा है, तो total number of degrees of freedom is 6. So in that way, today we have completed the degrees of freedom part, and next lecture we will definitely take the law of equipartition of energy, and of course we will discuss the mean free path. With that, we have completed today's lecture, and hope you have enjoyed this. Whenever you get any difficulty, please pause it and see and note down the written text, whatever they are on board. Please write down and also make your own notes from this. With that, thank you.